हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिनॉप्सिस का मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ चुका था और पकड़ रहा है। और कमल पाटनी साहब ने एक शिकायत इसकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कर दी थी। एक उसका पहले तो हिंदी वर्जन था, अब इंग्लिश वर्जन डाला है यहाँ पे। और साथ में जो अपने DS मूर्ति साहब हैं उनका भी एक कमेंट है इसमें। तो ये कहते हैं दैट द सिनॉप्सिस सबमिटेड बाय JD शर्मा हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल। JD शर्मा साहब ने जो सिनॉप्सिस दिया वो कंट्रोवर्शियल हो रहा, अब तो वो बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि उसमें इन लोगों ने IVA और बैंकों द्वारा किया गया एक अनलॉफुल एक्टिविटी जो इनवैलिड है, अल्ट्रा वायरस है, उसको अपना एक सबूत बना लिया है एंड इज डब्ड टू बी साइडिंग IVA स्टैंड। और ऐसा लगता है कि ये IVA का साइड ले रहा है। ए सेबोटियर, यानी सेबोटियर मतलब ये बिल्कुल सब कुछ बर्बाद करने वाला है। ये TS मूर्ति साहब का जो ईमेल ID है, लेट द ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रिवेल ऑन द पावर्स दैट बी फॉर जस्टिस एंड फेयर प्ले। अब नीचे जो लेटर भेजा था कमल पाटनी साहब, उसको मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि पहले तो हिंदी में बताया था, हो सकता है बहुत लोग समझ में नहीं आया हो। अब इन्होंने इंग्लिश में क्या लिखा है बता रहा हूँ। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 36B and 35 the Advocate 1961 serious professional misconduct in bank pensioners matters to Honorable Chairman Bar Council of India 21 Rao Avenue Institutional Area New Delhi or subject complaint under section 36B read with section 35 of the Advocates Act 1961 against concerned advocates for serious professional misconduct in matters relating to bank pensioners by misleading the Honorable Supreme Court through incomplete or misleading synopsis, suppression of statutory documents. Respected sir, I Kamal Patni, resident of Ratlam, Madhya Pradesh, a retired bank employee and bank pensioner, most respectfully submit that this complaint under section 36B and 35 of the Advocate Act 1961, invoking the supervisory and disciplinary jurisdiction of Bar Council of India, the complaint raises an issue of grave public and constitutional importance concerning the integrity of pleadings and fairness of assistance rendered to the Honorable Supreme Court of India in matters affecting lakhs of pensioners across the country. Background and causes of complaint. In litigation concerning bank pensioners, entitlement, pension-related benefits before the Honorable Supreme Court of India, the concerned advocates who were entrusted with the task of assisting the government prepared and filed synopsis and pleadings which were misleading and incomplete, deliberately suppressive of material statutory documents and binding agreements. Such conduct has materially prejudiced the lawful claims of bank pensioners and has the effect of misdirecting the Honorable Court on vital questions of law and fact. Specific acts of professional misconduct. The following serious lapses constitute the foundation of the present complaint. The 993 and 995 by-part settlement, which form the very basis of the bank pension scheme and pensioners' rights, were either selectively quoted or incompletely presented, substantially ignored in the synopsis placed before the Honorable Supreme Court. Consequential and decisive statutory document arising out of were not fairly or fully disclosed, including pension regulations framed pursuant to the settlement, statutory rules and bylaws governing pension, report of the pension, committee constituted for framing pension regulations, central government clarification (CGC) clarification and recognition issued by the Reserve Bank of India, treating bank pension as equivalent to statutory pension. The synopsis was drafted in a manner that diluted pensioners' legally enforceable rights, enabled the Indian Banks Association to file affidavits which were misleading and factually incorrect, and failed to discharge the advocate's paramount duty of full, fair, and truthful disclosure to the court. Legal and ethical violations. The above conduct squarely attracts disciplinary jurisdiction under Advocate Act 1961 or Section 36B. Supervisory powers of the Bar Council of India, rules, standards, professional conduct and etiquette,
रूल 1। और इन्होंने यहाँ ये बता रखा है कि जो ये सारा इनके रूल 1 क्या है, ये क्या है, सारी किस किस के अंतर्गत इन लोगों ने ये काम किया है। तो बताते हैं, ड्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस एंड कैंडर टुवर्ड्स द कोर्ट। रूल 11-15, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लाइंट्स कॉज। रूल 24, प्रोहिबिशन अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट मिसलीडिंग और इम्प्रॉपर कंडक्ट। सच एक्ट्स अमाउंट टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, dereliction of professional duty, and undermining of justice delivery process, impact in public consequences. As direct consequence of this misconduct, lakhs of pensioners are suffering from financial hardship, mental trauma, and prolonged uncertainty. Legitimate claims based on statutory and contractual rights stand jeopardized if established. The misleading of the Honorable Supreme Court strikes at the very foundation of judicial decision making, transcending a private dispute and tormenting the realm of institutional integrity. Prayer. In view of the above facts and circumstances, I humbly pray that the Honorable Bar Council India may be pleased to take suo motu cognizance of the present complaint and initiate disciplinary proceeding against the concerned advocates, examine whether there was a deliberate attempt to mislead the Honorable Supreme Court, ascertain whether material and statutory documents were intentionally suppressed or selectively presented, and upon establishment of guilt, impose appropriate disciplinary actions so as to preserve the sanctity, credibility and ethical standards of the legal profession. Date 28/1/26 और रतलाम और अपना उन्होंने दस्तखत वगैरह करके डाल दिया। दोस्तों, ये पहले इन्होंने हिंदी में डाला हुआ था, उनके पास रिक्वेस्ट आई पाटनी साहब के पास, भैया इंग्लिश में बनाओ। इंग्लिश में बनाया, फिर मेरे को मूर्ति साहब ने कहा कि हमने वो पढ़ा है और उसको आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजो, और इन्होंने वो भी पढ़ा है आपका जो सिनॉप्सिस, और दैट इज़ नॉट अप टू डेट, वो इरेलेवेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अब मैं चाहता तो क्या खींचूँ, आप सारे कुछ जानते हो, बहुत कुछ सारी चीज़ बता दी हैं। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।